आज क्लास रे आमे मूव करिवा टुवर्ड्स द लाइनक्स तो आमे फर्स्ट लाइनक्स सिखिबा लाइनक्स बेसिक्स लाइनक्स कोन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम केमती करछि ता विषय सिखिबा तापरे किछि कमांड सिखिबा वंस लाइनक्स कमांड सब जानि चला परे आमे शेल स्क्रिप्टिंग ऊपर को मूव करिवा तो वंस वी लर्न द लाइनक्स शेल स्क्रिप्टिंग देन अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स द डेवऑप्स ओके डेवऑप्स आमे सिखिबा तापरे देन मु जेमती आगुर एक्सप्लेन करथिली आमे किछि क्लाउड सर्विस सिखिबा देन किछि डेवऑप्स सिखिबा टूल सिखिबा सेमती कंबाइनडली हमें जदी करिबा तो हम बोथ क्लाउड एज वेल एज डेवऑप्स हमर कंप्लीट हे जो बहुत जल्दी राइट तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइनक्स फर्स्ट तो हमें एबे जते भी काम करिचे राइट तमे प्राय मोस्टली जे कोनसी पिला भी गोटे कंप्यूटर लाइन्स रे आसु कि आईटी सेक्टर को आसु तो फर्स्ट माने कोन जे कोनसी लैपटॉप यूज करू तो फर्स्ट थिंग हला से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे काम करूची राइट तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे केमती फाइल क्रिएट करिबा फाइल ले कोन राइट करिबा फोल्डर क्रिएट करिबा ए सब विषय बेसिक आइडियाज थाए तो आमे लाइनक्स आज कोन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काई सिखिबा तापरे लाइनक्स तार केमिति कोन यूज करिबा इंस्टॉलेशंस आ प्रोसेस टोटली मु तुमको बतै देबी आज राइट सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइनक्स ओके सो लिनक्स और वी कैन से लाइनक्स और लिनक्स एंड सेमती की जेमती हमें लिनक्स कोचे कि लाइनक्स कोचे सेमती मार्केट रे यूनिक्स भी अछि यूनिक्स जोटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे तो यूनिक्स लिनक्स बहुत सारा फ्लेवर बहुत सारा कंपनीज बहुत सारा फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स कमांड्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी मार्केट तो आमे जो लिनक्स का सब ओवरऑल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर सिखिबा तापर जानबा से केमती यूज होउची राइट देन फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लिनक्स लिनक्स का कोन लिनक्स इज एन ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमर विंडोज टा कोन हमर एंटरप्राइज विंडोज टा हमें परचेज करबा पड़िबो एटा ओपन सोर्स नुई राइट तो हमें फ्रीली विंडोज वी कैन नॉट गेट इट we have to if you are going to use windows machines or windows operating system then you have to purchase it right buy it तो हमको बाय करबा पड़ियो और परचेज करबा पड़ियो बट लाइनक्स को हमको यूज करियर अछि लाइनक्स मशीन्स की यूनिक्स मशीन्स तो तमे ओपन सोर्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड कैन इंस्टॉल इट ऑन योर मशीन तो लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड फैमिली ऑन द लाइनक्स कर्नल राइट सब ऑपरेटिंग सिस्टम रो गोटे कर्नल थाए जेमति विंडोज मशीन रे कर्नल अछि लाइनक्स मशीन पे लाइनक्स कर्नल तो कर्नल कोन गोटे बेसिकली कर्नल हां इट एक्चुअली गोटे कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जेमति कि तमे थ्रू कर्नल इट इज इंटरैक्टिव इट विल इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर तो हमें खाली जतले सॉफ्टवेयर गोटे इंस्टॉल करछे थ्रू सॉफ्टवेयर्स हमें कोन करछे इंटरैक्ट करछे हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भीतर अच्छे हमर कर्नल तो जेटा हमें गोटे इंटरैक्टिंग केते कमांड लाइन किछि कमांड दउचे किछि क्लाइंट रे कमांड एग्जीक्यूट करूचे तो से कमांड कोन करछे ना कर्नल सहित इंटरैक्ट कर थ्रू कर्नल इट इज इंटरैक्टिंग विद द hardware of the laptops okay softwares then kernels it will be in between your operating system there will be kernels and each operating system will have different kernels so those kernels will interact with your hardware or interact with your machines okay so and the base kernel was first published on 17th September 1991 by Linus Torvalds okay by Linus Torvalds so based on his name Linus we call it as Linux now right so Linux is an basically you can say Linux is an open source Unix like operating systems okay so typically Linux is packaged as the Linux distributions which contain supporting libraries system softwares and kernel so several of which offered in the GNU project so with GNU license, open source, all the GNU license, open source license, they are being used. Okay, so published by GNU projects. Okay, there are different Linux distributions. So, जेमती कि बहुत सारा फ्लेवर विषय में कहूथि बहुत सारा different distributions अछि तो Red Hat हमें जानी छे Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, SUSE, right? All these are Linux distributions. Similarly, I have heard another one is Mandriva Linux. Okay, so these are the different Linux distributions, right? Flavors. Okay, so
where Linux used, तो आमे जानले Linux टा कौन, but where it is used. So originally Linux was designed for personal computers that were Intel 86 architecture based, but it has since been moved to more environments than other operating systems. Like ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲାଇନକ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ୱିଣ୍ଡୋଜ ମେସିନ୍ସ ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ବେସିକାଲି କୋଉଠି ହଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ ବେସିକାଲି ଡେସ୍କଟପ ଲ୍ୟାପଟପରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ ତ ଆଜିକାଲି ୱିଣ୍ଡୋଜ ମୋବାଇଲ ବି ଫୋନ ଆସିଲାଣି ୱିଣ୍ଡୋଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ରାଇଟ ତ ଆମେ ଯଦି ଲାଇନକ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହବା ତ ଲାଇନକ୍ସ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର in your desktop, in your laptop, in your mobile phones, all Android phones, right? They have Linux platforms. They have all Linux platforms. Okay. So upper iOS, there are also Linux platforms. जितने भी हमें पाइबा जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी एविएशन सेंटर हो स्पेस साइंस हो एविएशन सेंटर हो जो भी તમે देखिए लाइनक्स यूज हो राइट तो including Android, including Android, Linux has the biggest installed base of every general purpose operating system because of the control of the Linux based Android over smartphones as of the May 2022. It has the mostly controlled, captured the mobile markets, right? Mobile OS operating systems Linux. So, however, Linux is used to just around 2.6 of desktop computers as of November. Only 2.6 is used by the desktop or laptop. Okay, only 2.6 desktop because see because everything been captured by Windows only. So that is why when Windows is doing kind of monopoly, right? It's not there is no open source and whatever. Yeah, and obviously Windows is very easy to learn and easy to use also, right? But here in Linux, what we have to do, you have to use the commands. You have to learn the commands. You have to remember those commands to work with the Linux machines. But Linux is more secure than Windows machine. That is why Linux is also popular. Okay, so as I said, only desktop computers, but other applications, most of the system programming, if you go, they'll be using Linux only. All maximum mobile devices, they are using Linux machines. Okay, so Linux executes on many embedded systems, generally embedded systems, that is devices whose OS is typically designed for the firmware and extremely customized to the systems. So system designing, embedded systems, right? System designing, system जोटा programming ଆମର ଅଛି ଯେମିତି କି health care ରେ aviation ରେ most of the aviation defense line ରେ ସବୁ Linux ହିଁ use କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ okay it includes spacecraft जोटा कहतली spacecraft रे space science रे right Dragon Crew capsule Falcon 9 rockets using automobile section रे most of the automobile section रे Linux use होची Toyota Hyundai Mercedes Benz Audi Tesla this kind of televisions LG Samsung some TVs were used video games most of the video game consoles they're using the Linux smartphones the IoT devices all the IoT devices right they're using the Linux platforms Linux machines okay so that is why where Linux is used you can see many where you can see Linuxes are being used okay the Linux market is developing and the Linux OS market size is supposed to see a development of 19.2% by 2027. So, एबेका डेट रे हम जब देखिबा मार्केट रे Linux रो UI फॉर्म भी असलेन बहुत एप्लीकेशन बहुत Linux डायरेक्ट Linux डेस्कटॉप और लैपटॉप भी मिलुची जोतरे कि तांकर UI Linux UI भी दोचे तो Ubuntu डायरेक्ट तार UI Linux ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट UI ଯେମିତି କି ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ଯେମିତି ୟୁଆଇ ପାଉଛ ଡ୍ରାଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ କରୁଛ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ ମାଉସ ଦ୍ୱାରା ମୁଭ୍ କରୁଛ ସେମିତି ତମେ ଲାଇନକ୍ସ ମେସିନରେ ୟୁଆଇ ରେ ମାଉସ ଦ୍ୱାରା ବି ତୁମେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍ ସୋ ରିଚିଂ $15.64 billion compared to 3.89 in 2019 so 2019 it was only 3.89 billion but it is by 2027 they're expecting to reach beyond $15.64 billion okay so where we can use Linux we can use web servers in our company all the web applications right here all the web applications we are using web servers okay we are using web servers are in Linux machines okay all web servers are our Linux machines similarly laptop or desktop ଏବେ ଆସିଲାଣି mobile devices ଯେମିତି କି କହିଲି maximum mobile device ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି film productions all film productions industry maximum they are using Linuxes government sectors because of its high security
things. So most of the government, yeah, government agencies, government, most of the countries they are using the Linuxes. Okay. So what is the Linux file system? The file system कौन है? Right? तो आमे जेकोसी देखिथिबा हमर गोटे फाइल सिस्टम आमे जतबेले फर्स्ट क्रिएट करबा गोटे विंडोज मशीन फर्स्ट विंडोज लैपटॉप ही कंप्यूटर न तो आमे पार्टीशन क्रिएट करू राइट डिफरेंट पार्टीशन तो डिफरेंट पार्टीशन जेमति सी ड्राइव डी ड्राइव डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन ले डिफरेंट यूसेज पय आमे रखू राइट तो सिमिलरली आमे जो फाइल सिस्टम लाइनक्स से कहू आमे एटा फाइल सिस्टम का पार्टीशन भी आमे करा जाय राइट तो फाइल सिस्टम कौन जनरली a Linux file system is generally built in layers of Linux operating system used to handle the data management of the storage. Data management of storage. ଯେମିତି ଫାଇଲ ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରେଜ ଆମର ଧର 1 ଟେରାବାଇଟ ର 1 ଟିବି ର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅଛି ରାଇଟ ଯେମିତି କି ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ର 1 ଟିବି ର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କୁ ଆମେ ସେପାରେଟ କରି ମଲ୍ଟିପଲ ଡ୍ରାଇଭ ବନେଇ ଦଉ ରାଇଟ ମଲ୍ଟିପଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ସୋ ମଲ୍ଟିପଲ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ସି ଡ୍ରାଇଭ ଡି ଡ୍ରାଇଭ ବେस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कीप इट तो सिमिलरली एटी कौन कोच हमें डिफरेंट फाइल सिस्टम बनेଇ दब राइट the storage को हमें partition कर दवा it helps to arrange the files on the disk storage and it manages the file names file size creation date much more information about the file तो हमें completely this file system ऊपर later stage रे जानिबा कौन information सब file से अच्छे तो Linux file system structure এটা कौन Linux file system has a hierarchical file structure as it contains a root directory ओके तो जेमिति कि आमे फर्स्ट जदी विंडोज रे गोटे विंडोज रे आमे जतबेला देखिबा राइट विंडोज रे तमे जदी गोटे किछि इंस्टॉल कल तो फर्स्ट कोथरे इंस्टॉल जरा सी ड्राइव बेसिकली हम सी ड्राइव इंस्टॉल तो वर्तमान सी ड्राइव हमर कोन हैला हम पई गेला रूट सी ड्राइव वाला रूट ए सी ड्राइव रे आमे जहा सब फाइल इंस्टॉल करियार अछि सी ड्राइव भीतर इंस्टॉल कर तो सिमिलरली लाइनक्स फाइल स्ट्रक्चर रे रूट हैला स्लैश एटा हैला रूट तो ए रूट रूट हमें जहां भी इंस्टॉल करिबा ए रूट रे इंस्टॉल करिबा और रूट रे सब फाइल स्टोरेज डायरेक्टरी फोल्डर स्ट्रक्चर सब स्टोर करी रखिबा राइट so linux file system has a hierarchical file structure as it contains a root directory and its subdirectories all other directories can be accessed from the root directory so starting with root directory जब partition हमें क्रिएट हो यूजुअली तो हमें पर्टिकुलर रूट रू आर देरु ही सब जगह फाइल सिस्टम क्रिएट हो देखो एटाला कोन हमरो रूट राइट रूट हमें देखले गोटे स्लैश राइट तो स्लैश रे बाकी सब डायरेक्टरी क्रिएट बिन डायरेक्टरी डेव etc यूजर्स होम लिव लाइब्रेरी राइट has been temporary var so bin directory all softwares तमे जति कोनसी सॉफ्टवेयर पैकेजेस तम चाहछो bin directory dev directory रख कर etc normally password configurations related stops will be stored in etc user directory तमे कोनसी user sections रो softwares binary install करछो bin directory man the manuals library store करछो local library share किछि file share करछो किछि so you can keep in user share drive home directory it will be home for every user तबे जेकोनसी ऑपरेटिंग सिस्टम रे यूजर क्रिएट कर इवन विंडोज रे कि लाइनक्स रे तो तंकर गोटे होम डायरेक्टरी क्रिएट हो होम देन यूजर नेम राइट सिमिलरली लाइब्रेरी सेक्शन so will keep all the library files means temporary files you want to keep it we can keep in tmp vars all related to variables vars related logs log temporary all we can keep in the variables okay so डिटेल्स जोटा मु बर्तमान कहली ता बेसी डिटेल्स रे हम देखिबा तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एटा कोन हैला हमर लिनक्स रो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ विषय हमें कंप्लीटली जानबा लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो केमिति डायरेक्टरी सेटअप कराउछ रूट डायरेक्टरी जे भी सब स्टार्ट होबो सब स्टार्टिंग विथ रूट डायरेक्टरी तो कंप्लीट रूट डायरेक्टरी ही स्टार्ट अप राइट So next comes the directory structure. The directories help us to store the files and locate them when we need them. So what it says? Directory structure help us to store the files and locate them when we need them. Also, directories are called folders as they can be assumed as folder. So, हमें Windows रे कौन को ଗୋଟେ folder create करू तो folder कोटी कौन
फाइल्स राइट तो हमें गोटे फोल्डर काई क्रिएट करियो ना हमें ऑर्गेनाइज गोटे किछि डेटा को ऑर्गेनाइजली वी कैन स्टोर इन ए फोल्डर तो गोटे जेमति कि हमें गोटे जेकोनसी मैनुअली धर विदाउट कंप्यूटर हमें कोनसी हमर डॉक्यूमेंट्स अछि पेपर्स अछि बहुत सारा पेपर्स तो हमें कोन करू गोटे फोल्डर माने गोटे कोन सेटा कोन कोंती जो पैकेट जो प्लास्टिक रो कोन फोल्डर पैकेट राइट तो सेतिरे हमें सब कोन करू एनवेलप कोन सही एनवेलप पर्टिकुलर डायरी भितरे हमें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सब रखू धर एटा हमर स्कूल पई गोटे स्कूल रो गोटे फोल्डर आन ता भितर रख देलु तो हमर एटा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहला माने घर बाड़ी जो कटा फटा की डॉक्यूमेंट्स हाउस डॉक्यूमेंट्स राइट रूम डॉक्यूमेंट वन हाउस डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट गोटे तो हमें सेग्रीगेट करी बा सेपरेट करी डिफरेंट फोल्डर डिफरेंट डॉक्यूमेंट सब स्टोर कर तो सिमिलरली हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रे कोन होबा ना हमें बा फोल्डर जो गोटे क्रिएट करू कोन करू हम डेटा को जो फाइल रहला ताको हमें ऑर्गेनाइज हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज दोस डेटा व्हाटएवर वी क्रिएट और यूज तो ऑर्गेनाइज करिक केमती डेटा को हमें रखिबा कोडी फोल्डर भीतर तो हमें फोल्डर क्रिएट करे सिमिलरली लाइनक्स कोन करबा ना हमें डायरेक्टरी क्रिएट कर तो ताको हमें फोल्डर भी कहि परिबा डायरेक्टरी भी तमे कहि परिबो ओके डायरेक्टरी can say is directory okay so these are the directories we are going to create where files reside in the form of physical desktop analogy. Directories can be organized in a tree-like hierarchy in Linux server like other operating systems. तो ये जो root direct हम जो right directory systems directory structure केमती गोटे गच्छ भले देखा होछ tree like right so we can see that is called also tree we can say what is the directory tree माने को सब फोल्डर सब डायरेक्टरी केते भीतर लेयर भीतर तमे रखिछ तमर कंटेंट डेटा राइट तो फर्स्ट आसला हमर रूट जोटा कि फाइल सिस्टम रो हमें कहछि रूट राइट तो रूट रे आसला कोन रूट ऑफ द फाइल सिस्टम इट इज अ टॉप लेवल फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टॉप लेवल फाइल सिस्टम डायरेक्टरी it must include every file needed to boot the Linux system before the other file system is mounted okay so we'll start with the root file system then comes boot it includes the static kernel and bootloader configurations and executable files so ଆମର ଦେଖିଦେଲେ କଣ ଆସିଲା root ତାପରେ ଆସିଲା boot folder suppose boot folder in the boot folder what we keep in boot directory it keeps all the static kernel and bootloader configurations तो जेतेबेले हमर गोटे सिस्टम स्टार्ट करिबा राइट स्टार्ट तो फर्स्ट बूटिंग को जाय ताको बूट हबो तो बूटिंग पीरियड रे जहां भी कॉन्फ़िगरेशंस तब बूट फोल्डर सब कॉन्फ़िगरेशन बूट हे जो स्टार्ट हबो राइट किछ स्क्रिप्ट थाउ किछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल थाउ सब बूट हे जो राइट needed to start a Linux computer. सब booting configuration से boot folder रे directory रहियो. Next comes bin directory. It includes all the executables files. तमे binary that is bin is nothing but the binary directory. So जते की executables file binary mostly executables तो जते की executable files तमे store करबे चाहू छ सब जगह /binary रे storage रहियो राइट तो binary file store ହେଲା. Next comes dev जोटा कि हम कहली it includes all the device files यदि hardware related किसी device files then we can go with the dev etc it includes the local system configuration files for the host system it includes the local system configuration files for the host system and library it includes shared library files that are needed to start the system it includes shared library files that are needed to start the system okay library it includes the local system configuration file for the host system home directory the home directory storage is available for user files तो हमें जेतेबेले कोनसी यूजर क्रिएट करबा first starts with home ru तार गोटे home directory create हो user related first जति files रहबो सब homes directory भितरे रहबो mount is for mount temporarily mount point for basic file system media all media related of contains or optional files root it's the home directory of root so basically slash is for root the root ro home directory ta na hochi root okay root ro home directory ta na hochi root ro it's home directory for a root user ro home directory na hala /root the slash ame janle it is the starting from the root right it hala root na hala root तार home directory hala
root plus root. Okay. Separate TMP ala temporary. It is used for directly used for the West kernel and several programs. SBIN user SBIN is for the binary files like binary executables utilized for system administration. SBIN for system binary files. Okay. Users they are read only and shareable files. So file tag user share can keep it. Variables like here variable data files, log files, email files. तमर किसी भी email send करूଛ किसी log किसी system application logs so सबे तमे सब store करि परिबो var ଯେମିତି କି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଆପାଚି ସର୍ଭର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୋଡ ଥିଲା var www/html ତ var ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆମର applications information file details ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ରାଇଟ ତ କଣ କରୁଛେ it contains such as mysql log files other database email boxes କିଛି ସର୍ଭର ୱେବ ସର୍ଭର ଯେମିତି ୱେବ ସର୍ଭର ଆମର କଣ ରଖିଥିଲେ httpd ରାଇଟ apache http server right तो यार इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करते कोडी var folder रे right so can see it now so key features specifying the path linux does not use the backslash remember linux does not use the backslash so backslash ta code use हुए backslash windows okay we use in windows machines this is used in windows machines and ଆମେ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଫରୱାର୍ଡ ସ୍ଲାଶ that is called backward slash backslash ତ ଆମେ forward this is called forward slash it is used in linux machines okay ଆମେ ଯୋଉ डायरेक्टली किमा फोल्डर सेपरेट करूछ फोल्डर नेक्स्ट फोल्डर को जाउछ तो गोटे फोल्डर बैकस्लैश ओके देन another folder name तो one folder to सब फोल्डर को जिबा पई तो हमें बैकस्लैश यूज करछे कोडी विंडोज रे तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करबा हमें Linux रे okay so we are going to use forward slash partition and directory drives Linux does not use drive letters so हमें drive letters use to organize the drive as Windows does so हमें drive की partition की use करनी so normally network devices it called as network devices in Linux we cannot tell whether we are addressing a partition or network devices or an ordinary directory and a drive जोटे कि हम विंडोज जानि पारे बट लाइनक्स रे हम जानि परिबनी डायरेक्ट डिवाइस रे कोन केस सेंसिटिव विंडोज रे तमे जे कोनसी ना देलो अपर केस लोअर केस इट इज ओके चली जीवो बट रिमेंबर दिस इज very important ओके केस सेंसिटिव तमे जहां भी लेटर लिखुचो सपोज मु लिखली रंजीत हियर राइट तो एटी कोन ला आर हला अपर केस राइट ये रंजीत आउला सपोज ई तीनटा ना जो कला ना मु तीनटा ना को सेपरेटली ट्रीट करिवो इक्वल नो बिकॉज़ केस सेंसिटिव एटी मु अलगा केस दे दे एटी कोन कली मोर हेगला अपर और लोअर केस मिसी के हेगला एटी हला केवल अपर केस एटी हला केवल लोअर केस तो ये तीनटा जाको टोटली डिफरेंट all are case sensitive okay तो तमे तो गोटे variable create करूचो make sure that variable whatever name you have given you are calling the same variable यदि टिकी एपट सेपट कर दलो ताले काम करिवोनी because case sensitive okay Linux file system is case sensitive it distinguishes between lower case and upper file names okay file name जोटा देइतलो exactly सही file नाम दबो किछि अलगा upper case lower case combination रे देइदलो माने गला काम करिवोनी ठीक अछि file extensions in Linux a file may have the extensions like .txt but it's not necessary that a file should have a file extensions but normally हमें कौन करछे ना विंडोज रे हमें फाइल एक्सटेंशंस गोटे क्रिएट करी रखुछे .txt .doc .ppt all these things right but एठी फाइल एक्सटेंशन रे किछ माने नै तुम जहां भी चाहे रखि पारी ओके हिडन फाइल्स तो विंडोज रे हमें हिडन फाइल्स रखु केमती राइट क्लिक करी करी हिडन फाइल्स टिक कर दले तो हिडन फाइल्स इज तो से हिडन फाइल्स हमको विजिबल वेन बट एठी हमें जदी हिडन फाइल्स एठी रखुचे तो लाइनक्स और विंडोज मशीन से एठी कोन हम हमें डॉट फाइल नेम स्टार्ट्स विथ डॉट फाइल नेम कुछ भी फाइल नेम तमे देलो तो सेटा है आज क्रिएट हे जो हिडन फाइल तो हमें नॉर्मल कमांड रे हमें किछि देखि परिबनी राइट तो सेटा हिडन फाइल स्टार्ट्स विथ a dot a file or directory starts with a dot any file remember in hidden file starts with a dot any file
or directory starts with dot. Okay, starts with dot. So that is your hidden files. Okay, so এটা আমার basic ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ତ next let's turn what is a sale. Okay, ତ कंपनी गोटे वेबसाइट अच्छी मुझे तुमको देखुचे जो वेबसाइट तुम यूज कर पारिबो तादरे लाइनक्स रो और शेल स्क्रिप्टिंग रो पूरा कमांड इंफॉर्मेशन सब दिया आइछि ओके तो जदि मु लाइनक्स कली तो लाइनक्स रे आमे कोन व्हाट इज लाइनक्स फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम रे आमे टोटल जानि देले कोन बुझी गेले राइट तो बेसिक फाइल परमिशंस एंड डायरेक्टरी विषय रे फाइल मैनेजमेंट और डायरेक्टरी विषय रे मु बुझेबी नेक्स्ट जस्ट अपकमिंग स्लाइड रे मु बतैबी राइट तो आमे जेतेबेले गोटे लाइनक्स फर्स्ट आमे यूज करूचे राइट ओके व्हाट इज लाइनक्स सब डिटेल्स रे बते देछि नेक्स्ट लाइनक्स लाइसेंसिंग कर्नल भीतर फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग कर्नल विषय रे बतौली राइट ओके तो आमे ई आर्किटेक्चर टा लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर ओके जदियो बेसी इंपोर्टेंट एते दरकार नै बट आर्किटेक्चर ऊपर बुझिबा तो कर्नल गोटे कोन कर्नल आमे जानिले इट्स द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बट कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम तो if you are going to understand this right kernel right so okay before we are going to understand the kernel hame janle is the heart of operating system so it interacts with the hardware first initially janle तो सेल कौन सेल इज द यूटिलिटी दैट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट माने एटा जो कमांड लाइन रे गोटे सेल होची गोटे यूटिलिटी व्हिच प्रोसेस योर रिक्वेस्ट and when you type a command to your terminal the cell interprets the command and calls the program what you want the cell uses the standard syntax for the commands and it interacts the kernel and kernel will interact with the hardware okay so if we understand this particular diagram okay let me just draw this diagram and I'll just make you understand how it works okay okay so हमें यदि entire Linux system को बुझिबा ओके फर्स्ट हमरो रहउची कोन हार्डवेयर राइट हार्डवेयर तो हार्डवेयर पूर्वरु परे रहउची हमरो कोन कर्नल रहउची कर्नल कर्नल परे रहउची हमरो सेल ओके तो रहउची हमरो application program okay तो हम इतबे application program जेमति कि हमें ईमेल किबा एफटीपी गोटे एग्जीक्यूट कले ठीक अछि कमांड यूज कले तो सेल कोन कहउछि हमें गोटे किछि कमांड एग्जीक्यूट कले सपोज मु कमांड एग्जीक्यूट कली कैट या फिर सीडी बहुत सारे कमांड अछि हमें सब ईच एंड एवरी कमांड्स वी आर गोइंग टू लर्न तो फर्स्ट कोन कहउछि हमें कोनसी कमांड गोटे एग्जीक्यूट करछे तो कौन करे एप्लिकेशन प्रोग्राम एपीआई थ्रू रे गोटे एग्जीक्यूट कले तो से सीडी कमांड किबा कैट कमांड सेल ताकू इंटरप्रेट करिवो सेल विल इंटरप्रेट दिस कमांड एंड विल send the response to the send the request to the kernel तो आमे रिक्वेस्ट कले कोडी की गोटे क्लाइंट रिक्वेस्ट कला तो रिक्वेस्ट तो सेल प्रोसेस करिवो इंटरप्रेट करी करी कोन कर्नल को पठेला कर्नल विल डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ व्हाट hardware the kernel who is the nearest to hardware kernel is the core of the operating system it's called the heart of the operating system so kernel will interact with the hardware तमर hardware सहित interact करिवो तो kernel को informations दबो किए cell तो cell रे हमें कोन करबा जो cell ता हमें जो टाइप करबा तो थ्रू एप्लीकेशन थ्रू CLI हमें किछि गोटे कमांड टाइप करबा सपोज cd is for changing directory ता विषय बहुत सारा एक्सप्लेन करबी तो जतो हम गोटे नुवा डायरेक्टरी गोटे आ गोटे डायरेक्टरी चेंज करबा पई चाहूचे तो हमें जतो सीडी यूज करले तो कोन करबे ना सेल कोन करबे तो इंटरप्रेट करबो को कमांड तमे एग्जीक्यूट कर तो से कर्नल को नोटिस पठेबो कर्नल को इंस्ट्रक्शन दबो कर्नल विल इंटरैक्ट विथ द हार्डवेयर तो बेस्ड ऑन दैट द वर्क विल हैपन देन व्हाट विल हैपन सेल विल चेंज दैट वन द डायरेक्टरी तो हमें कोन करे सेल हला कोन गोटे बेसिकली हमें कोन देखले सेल इज द interpreter which interprets the commands which we send
which the normally the user send the commands, it will interprets it. Okay. Now आमे आर विषय जानले तो बहुत सारा कमांड्स आउ यूटिलिटीज अछि जो कमांड्स आउ यूटिलिटीज थ्रू रे आमे इंटरैक्ट करूचे राइट तो बेसिकली आमे जदी से कमांड्स को जिबा ई सब कमांड लिस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न राइट ए सब कमांड आमे बर्तन देखिबा one by one all these commands we are going to see okay so ଯେତିକି ଶୁଣ ଯେତିକି command ମୁଁ ଦେଖୁଛି it more than enough to go with and start your career to start with Linux okay ତାପରେ ବି ତମେ ଯେତିକି advance ଯିବ ତାର ବହୁତ ସାରା networking command ଅଛି ବହୁତ ସାରା system admin command ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଧର career ଚାହୁଁଛ system admin କରିବା ପାଇଁ system admin means administration right system admin କରିବା ତମ ତ system related all commands you have to learn system commands ଯଦି ତମେ networking networking जाउछ system admin ଆଉ networking रे जाउछ और networking then तमे networking रो सब जाक command सिखबाकू पड़िबो maximum networking so whatever commands we are going to tell all these commands are the basic Linux commands with system admin and networking combinations of system net and admin so few system admin command आमे जानिबा few networking command also जानिबा तो आउ बाकी सब commands Linux रो basic commands ऊपर first discussion करिबा then we'll move into little bit system admin command जेंति कि user create करिबा password change करिबा ए सब विषय रे जानिबा केमति network केमति server को ping करिबा केमति server दी information जानिबा किछिटा networking command भी हमें सिखिबा तो first let's finish these are the basic commands which first we are going to finish then we'll talk about system admin commands then we'll talk about the networking commands okay so first let's go with these commands okay तो फर्स्ट हमको कौन करियर अछि गोटे Linux machine first हमें नबा राइट तो हम गोटे Linux machine क्रिएट कर दैछि so if I go to my Linux machine machine तो हमर ऑन होछि राइट so let's go to the putty session here I can use directly the user ec2 hyphen user at the rate okay so बताओ user दबाव पड़लानी directly user automatically से नहीं लगा right तो what we can do it so first command let's see हमें तो Linux machine को कनेक्ट हे गला बर्तन Linux CLI बर्तन डेटा को हमर सेल cron तो हमर सेल केते प्रकार अछि फर्स्ट जानबा हमें सेल रे कारण हमें सेल रे ही इंटरैक्ट करिबा राइट so first let's understand the type of cells we have okay हमें जानिले कोन सेल गोटे सेल एला गोटे interpreter which interprets the commands which receives from the user okay so हमें सेल विषय सेल तो सेल केते प्रकार अछि normally we have three types of cells okay three or four we can say four types of cell first we can say one is a born cell BOURNE born cell okay second we saw is born again cell okay third corn cell KORN corn cell four we can say C cell so four types of cell we saw right so this born cell we call it as SH this is we call it as BASH born again cell and this is called as KSH corn cell and this is called as CSH C cell okay so this SH and BAS now both are same SH has modified and improved to born again cell the born cell has been improvised to born again cell so we are going to use BAS corn and CS so C cell is also no more it's being used but very few
places where we can see to use, but mostly we use these two, bass and bass or corn cell. These two cells being used, and mostly we'll see in the interviews and all, maximum they are using bass cell, BASH, bass cell. This is what they can ask you, whether you have experience on the bass cell scripting on. Now we understand type of cells. Cell कौन जानिले, cell केते प्रकार अछि जानिले, कौन cell कौन ना तार आमे जानिले. तो first आमे जदि particular Windows machine, sorry, Linux machine को login करिबा, तो this is गोटे cell prompt, आमे गोटे cell prompt आसले, तो आमे एठी कौन देखले गोटे डॉलर, first गोटे डॉलर जान. तो डॉलर is the cell prompt here, dollar here cell prompt. ओके, तो एटा हमें बर्तन को सेल रे अछि केमिति जानिबा, टाइप करबा echo. तो echo कोन पई यूज करा हुए, echo होछि गोटे Linux command. तो to print something on the command line, to print on the console or print on the terminal, we can use echo command. Echo, suppose mu print karibi hello Ranjit, so what will happen, see, तो मु जहां भी टाइप कली echo से just echo कला, राइट, जेंती echo हुए हम गोटे कथा कहला हम कथाटा हमु भी सुबिबो, राइट, echo, राइट, तो ता नाटा से सेंति देछन echo, तो हमें जहां भी एटी टाइप कले, that command is only going to display here, echo. So basically echo command is to display the result on the terminal itself. Okay, display the output on the terminal itself. echo. तो मते मु जानियार अछि को सेल रे वर्तमान अछि, को सेल रे वर्तमान अछि, तो यूज कर परिबा echo डॉलर सेल. तो एठी डॉलर सेल जमा कंफ्यूज हबनी, मु धीरे धीरे तमे जानिबो, एके संगे तमे जानि परिबनी, धीरे धीरे जानिबो. तो सेल होछि को सेल ता मु वर्तमान अछि, मु जदि जानिया चाहिबी, देखो एटा कोन कला बीन बास, तुम को सेल रे अछि वर्तमान बास सेल, राइट, वी आर इनटू बीन बास. तो बीन बास रे अछि, तो बास रे इको डॉलर, तो सेल ता कोन हमर तो इको डॉलर सेल यूज कली. ओके, ओके, सो जो कमांड ता वर्तमान यूज कली, राइट, कोन कली इको डॉलर सेल. So echo dollar cell कौन वाला, echo वाला, why we to use echo, to display right the output, right, dollar cell. So cell is the environment variable, cell is the environment variable. तो एनवायरमेंट वेरिएबल हमें यूज करू सेल. तो सब जगह एनवायरमेंट वेरिएबल इन लाइनक्स, राइट, एनवायरमेंट वेरिएबल इन लाइनक्स विल बी इन अपर केस. ओके, जदि कोनसी वेरिएबल तमे क्रिएट करछो, दैट मींस तमे ओडे एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करछो. बेसिकली रिमेंबर, तमे जति की variable create करी जदि environment variable create करछो, maximum and all environment variables, not maximum, all environment variables will be in the upper case. Okay, तो डॉलर का यूज करा हुआ है, why we use dollar is to substitute the value whatever this variable is coming. So the cell is an environment variable. So what is a variable, तमे सब टेक्निकल लाइन पिला, राइट, बीटेक आ एमसी करछ, तो वेरिएबल कोन अछि, variable is a key or is a name which holds a value, right, variable is a key which holds the value inside it. Suppose mu gote variable create kali cell is a variable, environment variable. So what happens, this environment variable is holds the value bin bash. तो मुझे तो echo dollar cell print कली, तो इट से कौन कला bin bash. तो bin bash कौन is the value which the cell environment variable contains. जदि मु गोटे normal गोटे variable create कली name equal to Ranjit, तो कौन हैला, this is a
variable name, variable, and this is value. So this is a key name. Name is the key which holds the value as Ranjit. So variable हमें जानले कौन which holds a value is a key which holds a value, right? तो हमें echo command द्वारा हमें जानी पाइले कौन बस कौन यूज करछि माने को टाइप रो सेल यूसेज होछि, राइट? तो सिमिलरली हमें कौन करबा जानले तो फर्स्ट echo गोटे कमांड बुझिले जे प्रिंट करछि एनवायरनमेंट वेरिएबल ऊपर टिके आईडिया मिलला तापर लेट्स गो अहेड विथ चेक pwd. pwd is for present working directory. तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कोन माने तमे कोठी वर्तमान अछो योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को डायरेक्टरी तमे काम करूछो मु वर्तमान अछि ec2-user ec2-user this is my present working directory. suppose मु चाहूची ए डायरेक्टरी रो मु चेंज करी के अलगा डायरेक्टरी को जीबी so what I can do I can use cd. pwd हला present working directory, cd हला change directory. cd means to change the directory. Okay, so what I can do cd, suppose I want to go to temp directory /tmp. okay, see now I came to temp directory. if I do pwd means present working directory को डायरेक्टरी मु अछि वर्तमान present working directory. so pwd see मु जेतबेले फर्स्ट थिली कोन मु को डायरेक्टरी थिली होम यूसीटी यूजर रे थिली तापर मु कोन कली चेंज कली cd temp डायरेक्टरी चेंज कली तो cd temp डायरेक्टरी चेंज कली पुनी pwd मारली मु वर्तमान चेंज हे जायछि मो डायरेक्टरी को temp. तो वर्तमान मोर वर्किंग डायरेक्टरी कोन tmp/tmp, राइट? तो जस्ट दुईटा तीनटा कमेंट आज सिखिले आज पई एति की थाउ. नेक्स्ट तमे गोटे काम करो जस्ट इन लाइनक्स मशीन नै जस्ट प्रैक्टिस करो. हमें बहुत सारा कमांड मोर गोटे किछ गोटे काम अछि बर अछि तो बहुत सारा कमांड्स हमें प्रैक्टिस करबा. नेक्स्ट तमे जहां भी कमांड दली मु जहां भी डॉक्यूमेंट तुम शो करले से कब जाई तादरे कमांड तमे निजे निजे प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन करबा ना सही सब कमांड जो हम तुम लिस्ट कली बेसिक कमांड्स फर्स्ट कंप्लीट कर दबा. तापरे सुनो ये तो जस्ट छोटो छोटो कमांड सीडी रे भी बहुत सारा ऑप्शंस अछि केमती गोटे कमांड रो गोटे डायरेक्टली चेंज कले केमती मल्टीपल डायरेक्टली चेंज करे केमती प्रीवियस डायरेक्टरी जीवा से सब विषय में हम बहुत सिखिबा. तो आज कल जस्ट बेसिक हिंट्स दली. नेक्स्ट क्लास रे हम जो बाकी जो कमांड अछि तारे बहुत सारा ऑप्शंस इंक्लूडेड अछि तो गोटे गोटे कमांड हमको 10 मिनट्स 15 मिनट्स लागियो एक्सप्लेन करिया पय. तो मु सेमती स्लोली एक्सप्लेन करी गोटे गोटे कमांड जे से कमांड सब खाली तमे सुनी देले एठी काम करिवन यू हैव टू डू प्रैक्टिस. So Linux is not so easy guys. okay, तो तमे खाली जस्ट पढ़ी दबो कि मते सुनी दबो कि कोडी देखि दबो वीडियो काम करिवन until unless तमे निजे हाथ रे तमे कमांड टाइप करिन then you will not remember anything. এটা बहुत इंपोर्टेंट. विंडोज मशीन नो जे तमे लॉगिन कर दलो कोनसी ड्राइव को पळेलो फाइल टा डबल क्लिक कर ओपन हे गेला कॉपी पेस्ट कर दलो सरी गेला. बट दिस इज टोटली डिफरेंट. तो तमे सब जगह कमांड ही यूज करिवो आ सब जति की कमांड यूज करिवो सेही कमांड ही मने रखिवो जोटा कि तमे सेल स्क्रिप्टिंग रे काम आसीबो. सेल स्क्रिप्टिंग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कमांड्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. तो जति की कमांड सिखिबो सेटा सब जगह यूज होबो तमरे सेल स्क्रिप्टिंग. तमे जति तमे मैनुअल थिंग्स जानि न तो सेल स्क्रिप्टिंग ऑटोमेट करि पारिबो. सेल स्क्रिप्ट टाइम काई लिखिबा तो स्क्रिप्टिंग लिखुछि कि ऑटोमेट करिबा पाई किछि मैनुअल स्टॉप को हम ऑटोमेट करिबा पाई. तो हमें जे मैनुअल स्टॉप न जानिबा तो ऑटोमेट करिबा कोन. तो स्क्रिप्टिंग जिबा आगु तमे कमांड को सब तमे हैंडसम निजे करिबा को. तो मु जहां जहां तुमको सिखेबी जहां जहां प्रैक्टिस करेबी सही हिसाब रे तमे रेगुलर प्रैक्टिस करिवो. प्रैक्टिस करी एक्स्ट्रा किछि जानिबो चेष्टा करिवो देन वी विल मूव इनटू द सेल स्क्रिप्टिंग. ओके, सो टारगेट करिबा लाइनक्स टा को हमें गोटे 1 वीक भीतर सारिबा पाई. ओके.